Hello students, this video is for grade UKG. Let us start. So we have three different parts in this sheet in which we will get to know about three different subjects which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject which is of English. The question says, let's write rhyming words. ओके इन दिस यू हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे क्या करना है आपको, मिलते जुलते वर्ड यहाँ पे राइट करना है. ओके, जेट, जे ई टी, जेट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बेट, बी ई टी, बेट. बीन, बी आई एन, बिन. Tin, tin. Run, RUN, run. FUN, fun. MAT, mat. RAT, rat. अंडरस्टूड. इन दिस वे यू विल राइट द राइमिंग वर्ड्स. क्या करना है आपको? राइमिंग वर्ड्स राइट करना है. जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए इनसे मिलते जुलते जो भी आपको वर्ड्स यहाँ पे सुटेबल लगे उन वर्ड्स को यहाँ पे आपको फिल करना है. अंडरस्टूड? या. नाउ लेट अस रीड अल्फाबेट्स with one words and their spelling. A for apple, APPLE, apple. Ball, B for ball, BALL, ball. C for cat, CAT, cat. DOG, dog, D for dog. E for elephant, ELEPHANT, elephant. O for owl, OWL, owl. P for parrot, PARROT, parrot. Q for queen, QUEEN, queen. R for rabbit, RABBIT, rabbit. S for sun, SUN, sun. T for tiger, TIGER, tiger. U for umbrella, UMBRELLA, umbrella. V for
van. V-A-N. Van. W for watch. W-A-T-C-H. Watch. X for xylophone. X Y L O P H O N E. Xylophone. Y for yak. Y A K. Yak. Z for zebra. Z E B R A. Zebra. Now let's move to our next section, which is of EVS. What does the traffic light red, yellow and green means? यहाँ पे हमें बताना है कि रेड, येलो और ग्रीन का क्या मतलब होता है. रेड मीन्स स्टॉप. रेड हमें बोलता है रुक जाओ, आगे डेंजर है, डोंट गो अहेड, इट्स डेंजर, दैट्स वाई स्टॉप. STOP. स्टॉप. येलो का मीन्स get ready or wait. 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 Green means it's safe, you can go now. Go. 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 So you have to write the meaning of these three lights, कि हम इन थ्री लाइट्स को क्यों यूज करते हैं, यही आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके. स्टॉप, वेट एंड गो. रेड, ब्लू एंड ग्रीन. See the next. Remember that you should hold the hand of a grown up when you are near the road. Paint the right hand and keep impression on the paper. Okay. In this you have to paint your right hand. आपको अपने right hand को paint करना है और एक पेपर पे क्या करना है, अपने hand को put करना है. फिर क्या होगा, आपके hand का जो impression है वो पेपर पे आ जाएगा with that color. And after that जब वो पेपर सूख जाएगा तो आप उसको कट करोगे और कट करके यहाँ बॉक्स में पेस्ट करोगे. ओके. या नाउ लेट्स सी द लास्ट सेक्शन, विच इज ऑफ काउंट एंड राइट. मैथ्स का लास्ट सेक्शन है. इसमें आपको क्या करना है, काउंट करना है. लाइक 4 bars. 1 2 3 4. FOUR. 4. How many honeybees? 7. SEVEN. 7. Understood? And this way you have to complete the sheet. I hope you all have understood the sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.